Now, against the new farm laws, farmers, which we know it's day 10 of protests. Now, they've raised the stakes and given a call of Bharat Bandh on the 8th of December. The farmers have threatened to intensify agitation and block more roads leading to Delhi if the government does not accept their demand. 6 entry and exit points to the national capital continue to remain blocked. NH 44 has been closed on both sides. Punjabi singer Diljit Dosanjh reached Singhu border to support farmers' agitation. Meanwhile, support continues to pour in for farmers. DMK chief MK Stalin led a protest in Trichy in support of the farmers. Protesters came in bullock carts and staged a symbolic demonstration. In Bihar, RJD is protesting at Patna's Gandhi Maidan against the farm laws. The protest is being led by leader of opposition Tejasvi. I want to immediately connect right now to my colleague Tanseem Haider, who is joining us from the Singhu border. That is the border area which has seen a massive amalgamation of farmers from Punjab. Tanseem, just a short while ago, there was Diljit Dosanjh there as well in solidarity at the Singhu border. You've been speaking to the farmers. What's the sense that you're picking up in light of the talks that are taking place at Vigyan Bhavan? Tanseem, can you hear me? All right, we seem. Tanseem, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी प्रीति जी। तंसीम, आप बात कर रहे हैं वहां पे जो किसान बैठे हैं, यहाँ पे बातचीत हो रही है विज्ञान भवन में। आप क्या सेंस पिकअप कर रहे हैं अभी, क्योंकि थोड़ी देर पहले वहां पे दिलजीत दोसांझ भी थे सॉलिडारिटी में। जी, दिलजीत दोसांझ जब आए यहाँ पे तो किसानों में एक अलग ही जोश देखने को मिला। उसके बाद से लगातार उन्होंने अपने स्पीच में यह बात बोली कि ये एजिटेशन जो है वो पूरी तरह किसानों के साथ हैं। उनकी स्पीच करीब 30 मिनट तक वो यहाँ पे मौजूद रहे स्टेज पे। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ कि किसानों की बात सुनी जाए। तो किसानों में अभी भी यहाँ एक ऊहापोह की स्थिति है। किसान ये जानना चाहता है, हर किसान ऑनलाइन जुड़ा हुआ है अपने मोबाइल पे, कि किसी तरह पता चले कि मीटिंग का फैसला आखिर क्या हुआ, जिसके बाद ये तय हो सके कि आगे की रणनीति क्या है। यहाँ पे जितने भी किसान मौजूद हैं स्टेज पे, स्टेज के बाहर, मेरे ठीक पीछे सिंधु बॉर्डर पे करीब 15 किलोमीटर तक जो किसानों के गाड़ियां खड़ी हैं, उनके कैंप लगे हुए हैं और यहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है। तो जाहिर है सबके मन में यही संशय है प्रीति कि आखिर इसमें फैसला क्या होगा मीटिंग का, क्योंकि बहुत अहम मीटिंग है और हर शख्स ये चाहता है कि कुछ फैसला निकल के आए। लेकिन अभी तक चूंकि मीटिंग चल रही है, लिहाजा सभी इसी इंतजार में है कि इस मीटिंग में क्या होता है, उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। जैसा कि सिंधु बॉर्डर पे शुरू से ही पैरामिलिट्री फोर्सेस का रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ, उसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो कमांडोज हैं वो तैनात हैं। जो डिप्लॉयमेंट है वो वैसा के वैसा ही है। पुलिस ऑफिसर्स है, डीसीपी, जॉइंट सीपी लेवल के ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं और जाहिर है कि पूरी तैयारी है। किसानों का इंतजार है कि आखिर बैठक में क्या होता है, कि आगे की रणनीति तय की जा सके। तंसीम, बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने का। हम आपके पास आते रहेंगे। लेट्स जस्ट कट अक्रॉस राइट नाउ टू माय कॉलीग पूनम, हु स्पोक टू अ बंच ऑफ फार्मर्स एट द गाजीपुर बॉर्डर। उनके संघर्ष में हम लोग सर्दी भी बहुत हो गई है, फिर भी रुके हुए हैं। हाँ जी, बहुत सर्दी हो रही है, पर हम ज्यादा क्या नहीं, हम लोग रुके रहेंगे। इतने आर पार की लड़ाई लड़कर जब जाएंगे। अब की बार आर पार की लड़ाई होगी। 26 जनवरी पे ट्रैक्टर से और भैंसा बुग्गी से परेड होगी। हमारे फौजी भी करेंगे, हमारे सैनिक है और हम भी साथ रहेंगे। जय जवान जय। किस तरह की उम्मीद रख रहे हैं आप जो 5वें दौर की वार्ता हो रही है उसको लेकर? हम तो यही चाहें कि सरकार किसानों की बात मान ले तो सही है, नहीं मानने की तो अपना अड़े हुए हैं। आप बताइए किस तरह की चीजें आप चाहते हैं कि इस बिल को वापस ही किया जाए या फिर कुछ संशोधनों के साथ? मैम 10 दिन हो गए, अब ये बातें होती रहेंगी या कुछ काम भी होगा? काम तो कुछ हो नहीं रहा। हम बैठे हैं, सरकार बैठी है, बातें हो रही हैं, बस ऐसे काम नहीं चल रहे हैं। सब लोग आए हैं घर से जो रह रहे हैं वो भी अब आ जाएंगे 1-2 दिन। अगर आज मीटिंग में कोई सफलता ना मिलती है, कोई बात नहीं बनती है किसानों की, तो जो हमारे बहन बेटी घर में हैं वो भी आने के लिए तैयार हैं। और 26 जनवरी को इस सरकार को दिखा दिया जाएगा। यहाँ परेड किसानों की भैंसा बुग्गी से और ट्रैक्टर ट्रॉली से होगी। तो यानी कि गाजीपुर बॉर्डर पर भी उतनी ही गर्मी का माहौल आप देख सकते हैं। इस
सर्द शाम में भी। और किसान जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। और अगर ये 5वीं वार्ता जो आज हो रही है सरकार के साथ किसान नेताओं की, ये विफल होती है तो किसानों ने ये भी चेता दिया है कि उसके परिणाम जो है वो 2021 में 26 जनवरी को भी सरकार को भुगतने पड़ सकते हैं। Let's listen in to all the other political reactions coming in. ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वालों सारे नू। सत श्री अकाल। मैं बोलन नहीं सिर्फ सुनना ही आया अज तुहानू सारे नू। हम सब पीसफुल तरीके से बैठे हैं और जो भी किसान भाई चाहते हैं पूरा देश आज साथ है। प्लीज हमारा साथ दें और सरकार हमारी मांगे मांगे। तेजस्वी, किसानों के मुद्दे को लेकर आज आप सड़क पे हैं। बापू को कैद नीतीश कुमार जी ने करा दिया था क्योंकि गॉडसे के मानने वाले लोगों का पटना आगमन हुआ। आज हम सब लोग यहाँ जुटे थे कि बापू के सामने संकल्प लेंगे कि किसानों के संघर्षों के साथ हम लोग मजबूती के साथ एकजुट खड़े हैं। और एमएसपी का जहाँ तक बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जहाँ तक बात है, किसानों को मिलना चाहिए। इसका जिक्र ना होना आप समझिए कि ये निजीकरण के हाथों में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र जो है बेचा जा रहा है। सरकार की बातचीत हो रही है किसानों के साथ, लेकिन निष्कर्ष ढाकोसला है, वो दिखावा है। बातचीत अगर अच्छी होती तो किसान अपना खाना लेके गए, अपना खाया। 8 तारीख को भारत बंद करने का ऐलान है। आप जो है पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाइए और लिखित तौर पे दीजिए एमएसपी का जहाँ तक बात है। भारत बंद को समर्थन रहेगा? सब लोगों का रहेगा, पूरा देश खड़ा है। मांग क्या है, मुख्य मांग आप क्या चाहते हैं अभी? हमारा देखिए, हमारा मुख्य मांग है कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य हो और जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, आप देखिएगा कि अगर नेगोशिएशन करना पड़े, कोई बिचौलिया आकर के नेगोशिएट करे, अगर एमएसपी नहीं होगा तो दबाया जाएगा किसानों को। அந்த போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த விவசாய பெருங்குடி மக்களுக்கு இந்த மேடையிலே நின்று கொண்டு அந்த விவசாய பெருங்குடி மக்கள் அத்தனை பேருக்கு வணக்கத்தை சல்யூட் என்று அடிக்கக்கூடிய வகையில் அவருக்கு பாராட்டை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன்। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। Meanwhile, farmer groups are meeting 3 union ministers currently for the 3rd round of talks amidst the ongoing protest over the centre's new farm laws. Now, the talks began at 2 p.m. The farmer representatives are holding talks at the Vigyan Bhavan in Delhi with union ministers Narendra Tomar, Piyush Goyal and Som Prakash. India Today has learnt that the farmers have declined the centre's offer of some amendments in the farm laws, but the farm leaders aren't willing to accept the government's offer and are firm on their demand of repealing the newly minted laws. Meanwhile, the farm union leaders yet again declined government hospitality, bring in their own food. This even as farmers toughen their stand, announcing nationwide protest on 8th December if the government does not concede to their demands. This news break coming in right now. Farmers are adamant on their demand of complete rollback of farm laws. The latest filtering in from the meeting that has been going on since 2 p.m. right now suggests that farm unions have said that they have supplies for 1 year. Now it's up to the government to decide on what they want to do. Cutting across to Rahul Srivastav, National Affairs Editor, and Anand Patel, who's joining us live. It's an ultimatum, Rahul. It seems that the farmers have given it's all or nothing. Yes, Preeti. The word coming in from inside is that there is a sense of exasperation creeping in as far as the farm union leaders are concerned. After
more than an hour-long talk. It's a break. It seems that the farmer unions are realizing that the government is talking about smaller issues which are part of the charter of demands that they had submitted, not the real issue that not the real outcome that they want to take out of this meeting. And in fact, they are also under pressure. Why I say that one senior leader who was out in the break, when I called him up, I said that why is it that the union leaders are refusing the hospitality offered by the government? The answer was that if we don't send out these kind of signal, the eventual signal perception which will get built among the farmers is that there is perhaps we are hobnobbing with the government and we don't want to send any signal. That's the kind of intense pressure even the farm leaders are. Now, if they are under pressure, you can imagine the kind of pressure they might be exerting on the government. In fact, the government did try to weaken at least made an offer to the farmers that at least the senior citizen, young children and others who are part of the protest should be allowed to go back, should not be brought in here, so that at least there should be no inconvenience to the elderly and the young. But the farm leaders have said that this is just a beginning. We are going to bring in rations and supplies for next 1 year, and we are going to camp into Delhi. And you just heard some of the leaders saying 26 January, you will have bullock carts on the Rajpath. And that's the pressure that the government realizes. What we are told that also that Mr. Tomar and Piyush Goyal, the two senior ministers in the government who are meeting inside, have stepped out for a while for a discussion. And one junior Minister of Agriculture, Mr. Om Prakash, is right now holding fort. But eventually, if one looks at the way the proceedings have gone, the kind of news which has filtered out, one really doesn't think that there is a single point of convergence emerging that can actually make the farmer leaders go back and tell the farmers who are protesting that we can end our protest. A convergence doesn't seem possible even today. Appreciate you joining us, Rahul. We're going to continue to come back to you. Well, this seemed to be the final round, and that's the latest news break that is coming in. The talks, viewers, are deadlocked. It's been over 4 hours of constant talks between the government and the farmers. They did break for lunch, but even after lunch, and they didn't touch either water or the food offered by the government, the farmers are refusing to budge. It's all or nothing. These talks being deadlocked means what? Let's cut across to Anand Patel, my colleague who's joining us also outside Vigyan Bhavan. Anand, give us the farmers' side in it, because now they're holding the government to ransom. There's a huge protest on the streets. It's pretty much akin to what we saw 32 years ago. The farmers know that they have the government on its back, but the government doesn't seem to relent. What now? Well, the farmers have this strategy clearly chalked out, Preeti. They right since day one, on the 27th when they landed here, they were asked to go to Burari, and then the government set a condition that once they are in Burari, then only we will talk. The farmers came to Burari, had a look at the place, and then went back to Singhu border. They said that we are not ready to accept the government hospitality, despite all the tents put up there, all the blankets and cushions over there, despite the political parties setting up their eateries over there, food stalls over there. They are at the Singhu border refusing any government hospitality, and that is what they are doing here as well, not accepting any government hospitality, not accepting any food. The farmers are saying it's a do or die battle for them. And they have a ground support, massive ground support, which is building every day. Thousands of farmers are coming in every day from different parts of Punjab and also Haryana, with the Khap Panchayat supporting them. And the groundswell is there also in Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh. We are also told that the farmers of Maharashtra are also planning to join the protest, and they'll also start marching towards Delhi very soon. Imagine the situation which will develop on the borders of Delhi. Each passing day, the amount of people, amount of the farmers at the borders is increasing, and that is posing a lot of pressure on the government. But the sticking points over which the farmers, had given the 37-point agenda to the government is still trying to come up with its own theories, its own explanations on that, and that is leading to a lot of, time-consuming exercise which is going on inside. The farmers are very clear.
They don't want any amendments. They don't want any changes in the law. They want the law to be scrapped. And that is the only thing which they are reiterating again and again, and again. Last time also we saw 7.5 hours of meeting ended up in just, word of, concessions from the government that 3 amendments will be there. Today, another 2 amendments have been given forward by the government, but that is not clearly enough. Farmers are not going to give in. They are in for a long haul. They said they have rations for 6 months, and the government can take its time as long as it wants. They want to sit there peacefully and protest and agitate. Well, the farmers know. The farmers know they've got the government in a bind. In about a month's time from now is 26 January, folks. And that's the time, if the farmer agitation peaks, which it already has, many would suggest, and if it continues to fester, the government can't afford that. We're going to keep a keen eye on all developments. A quick break when we return on the other side. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.